Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. So today we are going to discuss pharmaceutical jurisprudence for upcoming GPAT Niper Drug Inspector and Government Pharmacist exam. So all jurisprudence we are going to take in the rapid revision manner, and whatever is important part from jurisprudence for GPAT Niper DI Pharmacist, we will discuss that only. We are not going to take jurisprudence thoroughly chapter wise, but jurisprudence is important subject for your upcoming exams. Pharmaceutical jurisprudence और जिसको आप PHJ बोलते हो, is a kind of regulatory subject, and we are going to discuss that. It is again important for GPAT Niper DI Pharmacist, and in the GPAT exam you can expect at least 4-5 questions from jurisprudence. Minimum 5 questions will be in the GPAT exam, and more than 10 questions will be in the Niper exam. For all kind of exam, जैसे आपका GPAT तो होता है, नाइपर होता है, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट एग्जाम है ना, तो GPAT तो है ही, प्लस नाइपर के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लस आपका DI के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और हर एक फार्मासिस्ट एग्जाम में कम से कम 5 या 6 क्वेश्चंस jurisprudence के आते ही आते. So jurisprudence is important for GPAT Niper DI Pharmacist. We are going to cover it in a hybrid way. So only important things for GPAT Niper that we will discuss. First of all, we will see some important milestones or some history or historical points behind the jurisprudence. So before the legislation or the ethics or laws come into picture for India, before that there was a so during this period, during the evolution of your jurisprudence, during the evolution of jurisprudence or in a pharmacy profession, so there are some milestones, there are some historical points which you have to take into consideration. And इसके ऊपर कभी कभी GPAT में क्वेश्चन भी आता है ना, जैसे देखो यहाँ पे I have enlisted these things. तो फर्स्ट इवेंट एंड उसका कमेंट है. तो फर्स्ट हॉस्पिटल इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1664 एट द रेड फोर्ट नोन एज है ना सेंट जॉर्ज, है ना, रेड फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास में पहला हॉस्पिटल आया था इंडिया में, इसका नाम है रेड फोर्ट सेंट जॉर्ज. मतलब क्या कि रेड फोर्ट नाम का हॉस्पिटल है, सेंट जॉर्ज ने उसको एस्टेब्लिश किया है, और कहाँ पे, मद्रास में. सो इन 1664 रेड फोर्ट फर्स्ट हॉस्पिटल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट जॉर्ज, मद्रास. फर्स्ट केमिस्ट शॉप, आपने फायदे का ये इम्पोर्टेंट. फर्स्ट केमिस्ट शॉप, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन भी आ चुका है. तो फर्स्ट केमिस्ट शॉप वाज स्टार्टेड इन 1811 इन द कोलकाता बाय द मिस्टर बाथगेट. The first chemist shop was started by the Mr. Bathgate in Kolkata. First chemist shop was started by Mr. Bathgate. इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. First chemist shop was started by Mr. Bathgate in 1811 in Kolkata. Then DEC, Drug Enquiry Committee. So first Drug Enquiry Committee was
was started or was enacted in a 1930 11 अगस्त 1930 में पहला ड्रग इंक्वायरी कमेटी था, उसको बोलते थे चोपड़ा कमेटी। फर्स्ट ड्रग इंक्वायरी कमेटी वाज was came in a picture in a 1930. So 11th August 1930, first drug inquiry committee was headed by R.N. Chopra, and that's why it is also known as the Chopra committee. So first DEC was started in a 11 August 1930 by the chairman R.N. Chopra. So ड्रग इंक्वायरी कमेटी और चोपड़ा कमेटी याद रखना है, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। नाउ DTEB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, फर्स्ट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, so to advise on a technical matters of the drugs to the government, to advise on a technical matters of a drug to the government. So DTEB board was constituted. The first drug inquiry committee was constituted on 11th August 19, headed by R.N. Chopra, known as Chopra committee or DEC or drug inquiry committee. Then first DTEB was constituted in 1941. पहला ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड आया था 1941 में, है ना। दैट इज टू एडवाइज ए टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग टू द गवर्नमेंट। DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। नाउ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, known as a CDL. The first CDL was first CDL was established in 1937. First CDL was established in 1937. जब 1937 में पहला CDL बनाया था उसको बोलते थे BSL, that is a biological standardization laboratory. First time it was established as a BSL, biological standardization laboratory. फर्स्ट टाइम CDL जब एस्टेब्लिश हुआ था तो उसको उस टाइम पे नाम था बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन लेबोरेटरी BSL, और बाद में उसका रीनेम किया गया एज ए सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। तो इन 1937 biological standardization laboratory, that is BSL, was established at Calcutta or Kolkata, and it is renamed as a CDL, Central Drug Laboratory, in 1940. So in 1937 BSL was established at Kolkata, and after that it was renamed as a CDL in 1940. Now first PCI was constituted on, इसके ऊपर तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम में, मतलब GPAT नाइपर DI फार्मासिस्ट में तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया was constituted on the date of, तो फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे आप है ना उसके अपन रोल वगैरह उसके फंक्शन वगैरह अपन देखेंगे बाद में। सो यू नो व्हाट इज मीन PCI मीन्स सेंट्रल काउंसिल, है ना। सो सेंट्रल काउंसिल और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज constituted on 9/11/1949, 9/11/1949। तो 9th of November 1949 में फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया was established, was constituted. The first pharmacy council of India was constituted in 9/11/1949 under the Pharmacy Act 1940. Under the Pharmacy Act 1948, first Pharmacy Council of India was constituted on 9/11/1949 under the Pharmacy Act 1948. ठीक है। Now first president of PCI, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ PCI कौन थे। जैसे 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ, उस टाइम पे पहले प्रेसिडेंट कौन थे। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ही वाज आल्सो नॉमिनेटेड इन 1949, तो उसी ईयर में नॉमिनेशन हुआ डॉक्टर CKE राजा,
डॉक्टर के राजा was nominated as a PCI president by the government. गवर्नमेंट ने इनको नॉमिनेट किया था फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया 1949. नाउ एजुकेशन रेगुलेशन, ER मतलब क्या, एजुकेशन रेगुलेशन, टू रेगुलेट द फार्मेसी एजुकेशन इन द इंडिया. तो फर्स्ट एजुकेशन रेगुलेशन वाज first education regulation was obtained approved by first education regulation was approved by government, है ना, that is on 11th of July 1953. तो 11th of July 1953 first education regulation was approved by Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. तो सबसे पहला एजुकेशन रेगुलेशन कब आया था? इसके बाद में 2-3 बार एजुकेशन रेगुलेशन आया है. तो सबसे पहला कब आया था? एजुकेशन रेगुलेशन इन 1953. नाउ क्वेश्चन आता है जैसे फर्स्ट बी फार्म कॉलेज अप्रूव्ड बाय PCI. तो बी फार्मा कॉलेज 1954 बिरला कॉलेज ऑफ फार्मेसी पिलानी, आजकल आप उसको बिट्स पिलानी बोलते हैं ना. So first B Pharm college was there, which was approved by PCI. That was a Bidla college Pilani, the Bits Pilani. Okay. First D Pharma college in 1955. Diploma Pharmacy College. First B Pharm college, Birla College of Pharmacy, approved by PCI in 1954. 1955 में Diploma College आया. तो first D Pharm college was approved by PCI in 1955 at a government college Amritsar, government medical college Amritsar. So at the government college Amritsar, government medical college Amritsar, at that place first time in 1955 your diploma pharmacy course was started and that was approved by PCI. AICT मतलब क्या? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. तो अभी तक देखो जी 2021 तक फार्मेसी वाज अंडर द AICT. फार्मेसी वाज अंडर द AICT अंटिल 2021. 22 से PCI के अंडर आ गया, तो तभी से स्टाइपेंड का इशू है. तो AICT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन was established on 23rd December 1987. 23rd December 1987. Okay, it was enacted. AICT Act was enacted, and All India Council for Technical Education Act covering your pharmacy education was enacted on 23rd of December 1987. तो ये कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स है, इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन 100% इसके ऊपर आता है, तो यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन तो आ जाएगा. नाउ डिफरेंट एडिशंस ऑफ इंडियन फार्माकोपिया. ओके सर, केमिस्ट्री किच नहीं है, केमिस्ट्री किच ये काही येत नाही, क्वालिफाय होईल कमी होऊ शकतं, काही अडचण नाही, केमिस्ट्री नाही आहे, क्वालिफाय होऊ शकतं, काही प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन्स आणि थोडंफार करो कोणतं थोडंफार तुमचं स्टिरिओ केमिस्ट्री जर केलं तरी पण होऊन जाईल, काय अडचण नाही. नाउ डिफरंट एडिशन्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया. बिकॉज डिफरंट एडिशन ऑफ फार्माकोपिया इज अगेन इम्पॉर्टंट. इसके याच्यावरती पण भरपूर क्वेश्चन आलेले. तर डिफरंट एडिशन्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया. फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज published in 1955. First Indian Pharmacopoeia was published in 1955. इसके ऊपर कम से कम 2 या 3 बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका ना, मतलब वेरियस एग्जाम में कम से कम 3 बार रिपीटेडली क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर. तो डिफरेंट इंडियन फार्माकोपिया एंड देयर एडिशंस ना. फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द 1955 है ना. 1955 में पहला इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था. एक उसके 10 साल बाद सेकंड
An edition of Indian Pharmacopoeia was published in 1960. देखो 10 साल का गैप है. First Indian Pharmacopoeia was published in 1955. Second was published in 1960. Third edition of Indian Pharmacopoeia was published in 1985. तो ऑलमोस्ट अगेन है ना, यहाँ पे 20 years. आप ऐसा याद रखो, 66 + 20 1986 होता है ना, तो ऐसा ही याद रखो आप, है ना, 19 years. So first 1955, second 1966, third 1985. Now fourth edition or fourth Indian Pharmacopoeia was published in 1996, है ना, तो यहाँ पे भी अगेन 10 years. So that was made effective on 1st of December 1996. Now fifth edition of Indian Pharmacopoeia was published in 2007. And some addendum was there in 2008. Sixth edition of Indian Pharmacopoeia was published in 2010 by IPC Ghaziabad. Actually Indian Pharmacopoeia क्या है? So what is Indian Pharmacopoeia? It is an official book. It is a official reference in which all the drugs quality and as well as testing procedures, then method of preparation, synthesis, everything is given in an Indian Pharmacopoeia. So it is the first official book containing the standards of your drugs. So first official book or official reference of standards of books, that is a standards of drug, that is a pharmacopoeia. Every country has its own pharmacopoeia. So Indian Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia, USP, United States Pharmacopoeia, EP, European Pharmacopoeia. So our pharmacopoeia was taken as a mixture of British Pharmacopoeia. British Pharmacopoeia से अपना pharmacopoeia चलो हुआ, क्योंकि अपने यहाँ पे ब्रिटिश का रूल था, ये तब से. So fourth Indian Pharmacopoeia was published in 1996. Fifth edition was in 2007. Sixth edition was in 2010. Seventh edition of Indian Pharmacopoeia was in 2014, published by Indian Pharmaceutical Council on behalf of Ministry of Health and Family Welfare. IPC मतलब Indian Pharmacopoeial Commission. IPC मतलब क्या? Indian Pharmacopoeial Commission. So Indian Pharmacopoeial Commission will publish the Indian Pharmacopoeia. Indian Pharmacopoeial Commission. Indian Pharmacopoeial Commission. So Indian Pharmacopoeial Commission will publish the Indian Pharmacopoeia, which is a official standard book for drugs. So in which method of preparation, then method of testing, conditions for testing, assay, and everything is given in the Indian Pharmacopoeia. So it is a standard book for drugs, quality of drug, which assures the quality as well as quality of drug. So 8th edition of Indian Pharmacopoeia was published in 8th edition था 2018 में. तो 8 है ना, आप इसको 8 to 8 याद रखो, है ना, 8th edition, और इसको 7 देना, तो 7 into 2 14 ऐसे याद रखो, मतलब ये इजीली याद होता है. 7th edition in 2014, 8th edition 2018, 9th edition, current edition is 9th edition, that is published in 2022. So remember, I would like to repeat it. So Indian Pharmacopoeia is an official book for standards of drug, and it is published by Indian Pharmacopoeial Commission. Indian Pharmacopoeial Commission under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Now, first edition was published in 1955. Second edition after 10 years, 1966. Third edition after again 20 years, 19 years, that is 1985. Fourth edition was in 1996.
5th edition was there in 2007, 6th edition 2010, 7th edition 2014, 8th edition 2018, and 9th edition was there in 2022. बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन हैज बीन ऑलरेडी देयर इन GPAT Niper DI Pharmacist. ऑर्गॅनिक अनालिसिस कुठून करू सर? यू कॅन कॉल मी डायरेक्टली, तुम्ही मला कॉल करा. यू प्लीज कॉल मी आफ्टर 8:30. I will explain. Thank you. Thank you. Biochemistry is my one of the favorite. So again, different Indian pharmacopoeia, its edition and color. कलर के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आता है आपको, तो याद रखना है आपको. इंडियन डिफरेंट कलर होते हैं, जैसे ज़्यादा तो कलर नहीं है, कलर कॉम्बिनेशन ब्लू, ग्रीन, रेड, डार्क ब्लू या फिर मैक्सिमम ऑरेंज, तो इतने ही कलर के कॉम्बिनेशन है ये फार्माकोपिया में. तो इंडियन फार्माकोपिया 2010 IP दो है ना, IP 2010 इज अ ब्लू कलर्ड, IP 2014 इज अ ग्रीन कलर्ड, 2018 is a red colored or orange colored, and 2022 is a dark blue color. So different editions of Indian pharmacopoeia, different. मला शिकू द्या, तुम्ही फोन करा मला डायरेक्टली, मी बोलो. काय आता डिस्टर्ब होत ते मध्येच ना. सो IP 2010 blue color, IP 2014 that is a green color, 2080 is a red colored, and 2022 is a blue colored. Okay, so very important. This is very important. Now after independence in 1947, the Indian Pharmacopoeia Committee was constituted, and the Indian Pharmacopoeial Committee was constituted in 1948. तो जब अपन ब्रिटिश से अपने यहाँ पे आज़ादी मिली आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947, सो 1948 में इंडियन फार्माकोपियल कमीशन वाज constituted for the publication of Indian Pharmacopoeia. Publication of Indian Pharmacopoeia is the main function of that IPC, Indian Pharmacopoeial Committee. The Indian Pharmacopoeia edition are as follows. तो और एक बार रिवाइज करो. देखो, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया है ना was published in 1955. First edition, second edition 1996, third edition 1985, fourth edition 1996, fifth edition 2007, sixth edition 2010, seventh edition 2014, then eighth edition 2018, and ninth edition 2022. ये एडिशंस इंपॉर्टेंट है. एडिशंस के ऊपर क्वेश्चन आता है आपको GPAT Niper DI Pharmacist में. तो ऑल दिस एडिशंस आर इंपॉर्टेंट. Now we'll see different acts and penalties under every act. So jurisprudence में आपको कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है? What they can ask from jurisprudence? So first of all, they can ask act, year of passing, their objective. There they may ask question on this, but that is they used to ask for diploma students. What is the objective of Pharmacy Act? What is the objective of DNC Act? तो उस टाइप के क्वेश्चंस डिप्लोमा के लिए छोड़ दो. सेकंड थिंग व्हाट दे कैन आस्क यू द एक्ट एंड डेफिनेशंस अंडर एवरी एक्ट.
So for example, registered medical practitioner, pharmacist, or what do you mean by drug? What do you mean by cosmetic? What do you mean by adulterated drugs, spurious drug, misbranded drug? So on that part they used to ask question. Third thing, what they can ask, act and penalties under every act. So any contravention of any provisions of the act that leads to that is being punished. So what is the penalty and what is the conviction? So different penalties and their conviction. Under the DNC Act, you can go for schedules, you can go for forms. That is important. So that in a Pharmacy Act also, PCI, DTAB, CDLs, then State Council. So members of PCI, DTAB, CDL, they used to ask question on this. So we'll try to complete that. Don't worry, I have ready all the things. Right? सगळे मेरे पास सब कुछ ready है और यहाँ पे अपन लेंगे. So different acts and their penalties in relation to the jurisprudence. मतलब पहला अपन देखेंगे कि Pharmacy Act. Pharmacy Act was enacted on 4th March 1948. 4th March 1948. इसके ऊपर भी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है. Pharmacy Act was enacted on 4th March 1948. Pharmacy Act was enacted on 4th March 1948. What was the objective? To regulate the pharmacy profession in India. Now, what are the penalties under that act? In the details of the act we will see later on. Okay, first we will see the penalties because they are important. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. So, under the Pharmacy Act 1948, the contraventions, what are the penalties? So first is nothing but the falsely claiming registered pharmacist. So if you are doing your B.pharm, आपने आपका B.pharm चालू है और आप खुद को बोल रहे हो कि आई एम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. आपका B.pharm, D.pharm जो भी है, डिप्लोमा फार्मेसी, B.pharm कंप्लीट नहीं हुआ है और आप खुद को क्या बोल रहे हो, आई एम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. तो you are not a registered pharmacist. You have to register yourself in a state council, then only you will become a registered pharmacist. अभी आपका चालू है कोर्स, कंप्लीट होने के बाद में आप अगर स्टेट काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाते हो तब जाके आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाओगे, उससे पहले नहीं. तो इफ एनीबडी इज क्लेमिंग दैट ही इज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, विच इज द फॉल्स, a falsely claiming registered pharmacist is punishable under the Pharmacy Act 1948. And what is the fine? So fine of 500 on a first conviction. अगर पहली बार अगर आपने गलती किया, पहली बार आपने अगर गलती तो नहीं है, ये कन्विक्शन है, गुनाह किया, पहली बार अगर गुनाह किया तो फर्स्ट कन्विक्शन ऑन फर्स्ट कन्विक्शन यू विल गेट अ फाइन ऑफ 500, है ना, 500 रुपीज का फाइन भरना है आपको. ऑन अ सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, है ना, अगर दोबारा गलती किया, दोबारा अगर गुनाह किया, ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन फाइन ऑफ 1000, है ना, एंड और 6 month इम्प्रिजनमेंट. इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या, जेल. इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल, 6 महिने अंदर जाना पडेगा, है ना. तुम्ही गाणं म्हणतात ना, जेव्हा भेटन ना, म्हणतो भेटन जेव्हा मी गुन्ह्यात, मला अटक करावं पुण्यात, है ना. तिथं खूप दूरची गोष्ट आहे. फॉल्सली क्लेमिंग फार्मासिस्ट, तुम्ही जर चुकीच्या पद्धतीने म्हटले की मी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आहे, तरी पण तुम्हाला 6 महिन्यापर्यंत तुमचं मग मुक्काम पोस्ट येरवडा होऊ शकतो. राईट. फॉल्सली क्लेमिंग फार्मासिस्ट, फाइन ऑफ 500 रुपीज ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन फाइन ऑफ 1000 रुपीज एंड और 6 month इम्प्रिजमेंट, है ना. मतलब पहली बार गलती किया तो 500 रुपीज का फाइन, दूसरी बार भी किया तो मतलब आपने जानबूझ के किया तो 1000 रुपये फाइन लगेगा. उसके साथ में 6 महीने की जेल भी हो सकती है, या फिर से फाइन लग सकता है, या फाइन लग सकता है आपको, या फिर 6 महीने की जेल ही हो सकता है. ठीक है. नाउ दैट इज द फर्स्ट. ओके. सेकंड पेनल्टी देखो, डिस्पेंसिंग बाय नॉन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, है ना. आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं हो, आपका B.pharm हो चुका है और आपको लगता है आप उन्हीं भगवान है ना. तो आपका B.pharm हो चुका है, आपको लगता है आप उन्हीं भगवान है, कल से गया मेडिकल स्टोर चालू किया, ड्रग देने लगा लोगों को, डिस्पेंस कर रहा, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है. डिस्पेंसिंग बाय नॉन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट
is liable for punishment, that is imprisonment of 6 months and fine of 2000 rupees or both. Dispensing by non-registered pharmacist is punishable under the Pharmacy Act 1948. Imprisonment of 6 months, fine of 2000 rupees or both. एक तो 6 महीने की सजा हो सकती है, 2000 रुपए का फाइन लग सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं. डिस्पेंसिंग बाय नॉन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एक्सेप्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर. जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो गए, डॉक्टर लोगों को क्या है कि उनको अलाउ किया है ना. सो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर दे हैव एक्सेप्शन, दे कैन डिस्पेंस. नॉर्मली आपको नहीं डिस्पेंस करते, लेकिन उनको भी दिया है गवर्नमेंट ने, एक्सेप्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर, राइट. थर्ड पेनल्टी इज दैट फेल्यूर टू सरेंडर द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, है ना. मतलब व्हेन यू विल रजिस्टर योरसेल्फ इन अ फार्मेसी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, दे विल इश्यू द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. आपने किया होगा, मैंने तो 2008 में ही किया था, मेरे पास सर्टिफिकेट है, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ काउंसिल. तो अगर बाय चांस और बाय बिकॉज ऑफ द एनी माल प्रैक्टिसेस और बिकॉज ऑफ द एनी कंप्लेंट, अगर आपका लाइसेंस सस्पेंड किया है और आपको पीसीआई ने बोला है कि आप फार्मासिस्ट रहने के लिए लायक नहीं हो, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमें वापस दे दो ना, सरेंडर करो. एंड इफ यू आर नॉट डूइंग सो, अगर आपने उसको सरेंडर नहीं किया, तो अगेन दैट इज ऑल्सो पनिशेबल. तो थर्ड पेनल्टी इज नथिंग बट द फेलियर टू सरेंडर द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. फेलियर टू सरेंडर द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दैट इज अ फाइन ऑफ 50 रुपीज. कम है थोड़ा, लेकिन है, अभी रिवाइज होगा बाद में. आजकल उतना नहीं, ज़्यादा लेते, लेकिन उतना है. अब फोर्थ इज नथिंग बट द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इंस्पेक्टर्स. अगर आपका कॉलेज में पीसीआई इंस्पेक्टर आ गए, अगर आपने उसमें उनको बाधा डाल दिया कि नहीं नहीं सर साइड में चलिए, है ना, कुछ ले दे के हो सकता है क्या, इस तरीके का कार्यक्रम आपने किया आपने उनके साथ, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इंस्पेक्टर, सो इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ और फाइन ऑफ 2000 रुपीज और बोथ. तो अगर पीसीआई इंस्पेक्टर का उनका काम उनको करने नहीं दिया आपने, उनका काम है कि वो आएंगे आपके कॉलेज के ऊपर इंस्पेक्शन करेंगे, अगर आपने उनके काम में बाधा डाली या फिर उनको ऑब्स्ट्रक्ट किया, उनको रोका, obstruction of state pharmacy council inspector, so you are liable to punish with the imprisonment of 6 months and fine of 2000 rupees or both. ठीक है, ये 4 देखो पेनल्टीज है. इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चंस 2-3 बार आ चुके है ना, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं. फॉल्सली क्लेमिंग फार्मासिस्ट 500 रुपीज ऑन फर्स्ट, ऑन सेकंड 1000 रुपीज और 6 month imprisonment. Dispensing by non-registered pharmacist 6 month imprisonment, fine of 2000 rupees or both. Failure to surrender the registration certificate, so fine of 50 rupees. Obstruction of state pharmacy council inspector, again 6 month imprisonment and fine of 2000 or both. Okay, so these are the important penalties and convictions related to Pharmacy Act 1948. Okay, now we'll see the next. So very important again, Drug and Cosmetic Act 1940. So Drug and Cosmetic Act 1940 and rules under 1945. ना डिटेल में अपन बाद में देखेंगे. Now under the DNC Act there are 2 main convictions. So first is A, second one is a B. So if you are involved in the manufacturing, sale or distribution or adulterated, misbranded, spurious or non-standard drugs, if you are involving either manufacturing or selling or distributing any adulterated or misbranded or spurious or non-standard quality of drugs, yeah, so which are likely to cause death or grievous hurt, है ना. अगर आपने कुछ, है ना, ऐसा मिसब्रांडेड या फिर अडल्ट्रेटेड या फिर नॉन स्टैंडर्ड ड्रग क्या किया, इधर मैन्युफैक्चरिंग किया या फिर आपने उसको सेल किया या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, जिसके कारण
किसी की मौत हो सकती है या फिर उसको बहुत बड़ा सदमा लग सकता है या बहुत बड़ा उसका लॉस हो सकता है ना। दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सेल डिस्ट्रीब्यूशन of adulterated, misbranded or non-standard quality drug which likely to cause death or grievous hurt is a punishable. Now what is the punishment? The punishment is nothing but the imprisonment not less than 5 years. आपको 5 साल 5 years आपको 5 साल की जेल हो सकती है, मुक्कम पोस्ट यरोड़ा हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड दैट में एक्सटेंड अप टू द लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड फाइन ऑफ 10,000, 10,000 का फाइन भी लग सकता है। नाउ सेम थिंग, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अडल्टरेटेड, मिसब्रांडेड, स्पूरियस और नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग्स विच आर नॉट लाइकली टू कॉज द डेथ और ग्रीवियस हार्ट। मतलब है ना, मतलब आपने क्या किया कि अडल्टरेटेड, मिसब्रांडेड, नॉन स्टैंडर्ड आपने एक तो मैन्युफैक्चरिंग किया या फिर अपने सेल में इन्वॉल्व हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व हो, जिसके कारण कोई मरता है या फिर उसको बहुत बड़ा हानि पहुंचता है, तो उसके लिए अलग पेनल्टी है। या फिर आपने मैन्युफैक्चर किया, सेल किया, डिस्ट्रीब्यूट किया अडल्टरेटेड, मिसब्रांडेड और नॉन स्टैंडर्ड ड्रग, जिसके कारण किसी की डेथ नहीं हो सकती या फिर उसको बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आपने वो किया है ना, उसके लिए अलग पेनल्टी है ना। तो इफ यू आर इन्वॉल्व इन द अबव बट नॉट लाइकली टू कॉज द डेथ और ग्रीवियस हार्ट, अगेन पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट not less than 1 year, not less than 1 year, which may extend up to 3 years, है ना। 1 साल की मिनिमम सजा है, वो 3 साल तक भी बढ़ा सकते हैं। एंड फाइन 5,000, फाइन नॉट लेस देन 5,000 ऑन अ फर्स्ट कन्विक्शन। अगर दोबारा वही कर रहे हो आप, इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 2 years, विच में एक्सटेंड अप टू 6 years एंड फाइन लगेगा आपको 10,000 रुपीज। तो ये दो मेन कन्विक्शंस है अंडर द डीएनसी एक्ट, है ना। इफ यू आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द मिसब्रांडेड, अडल्टरेटेड, स्पूरियस, नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग which can cause grievous hurt or death of the anyone, so punishable with the imprisonment of 5 years which may extend up to lifetime imprisonment, है ना, and fine of 10,000। and वही चीज if you are involved in the manufacturing, distribution, selling of misbranded, adulterated, spurious, non-standard drug but which will not cause a death or which will not cause grievous hurt to the patient, but still you have convicted, so that is under punishable, that is also punishable under DNC Act, but imprisonment not less than 1 year which may extend up to 3 years, fine 5,000 on first conviction। second conviction में है ना, imprisonment not less than 2 years and fine, है ना, which will extend up to 6 years and fine 10,000। उसके बाद में भी इसके अंडर और है पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर। मतलब आपने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया, लेकिन क्या किया, आपके मेडिकल में ऐसा कुछ दवाई आपने सेल किया जिसके कारण किसी का विकेट गिर गया। सपोज यू हैव सोल्ड सम मेडिसिन एंड बिकॉज ऑफ दैट मेडिसिन समबडी डाइड, है ना, मतलब आपने सेल किया, किसी का विकेट गिर गया, तो क्या करेंगे। एंड आप तो अभी उनको बोल नहीं रहे हो कि मेडिसिन किसका था, कहाँ से लाया था, मैन्युफैक्चरर कौन है, तो आपको भी पनिशमेंट मिलेगी। पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, दैट इज पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 year, इम्प्रिजनमेंट 1 year होगा एंड फाइन लगेगा आपको 10,000 और बोथ, है ना। तो non-disclosure of the name of manufacturer liable for punishment of
imprisonment of 1 year or fine of 10,000 or both. Second, penalty for non-keeping the document, the penalty for not keeping the documents or not disclosing the information. तो वही imprisonment of up to 1 year, fine of 10,000, fine of 1,000 or both, है ना, fine of 1,000 or both. Penalty for not keeping the documents or not disclosing the information, imprisonment up to 1 year or fine of 1,000 or both. Penalty for advertising a report of government analyst. Penalty for advertising a report of government analyst, मतलब आपके मेडिकल से क्या किया, ड्रग इंस्पेक्टर ने सैंपल लिख गया और बाद में वो उसका रिपोर्ट आया कि सैंपल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, और आपने वो क्या किया कि वो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया. सो पेनल्टी फॉर एडवर्टाइजिंग द रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट, दैट इज अगेन पनिशेबल with the fine of 500 rupees on first conviction, and on a subsequent conviction imprisonment of 10 years or fine or both. तो अगर मैन्युफैक्चरर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर रिटेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, आपने आपका सैंपल FDA ने टेस्ट किया, उसका रिपोर्ट दे दिया, उसका रिपोर्ट अच्छा आया तो आपने क्या किया, वो रिपोर्ट आपका न्यूज़पेपर में डाल दिया, देखो हमारे यहाँ पे कंपनी में जो प्रोडक्ट बना है वो FDA ने अप्रूव किया है और उसके ऊपर इतना अच्छा क्वालिटी है. आपने तो एडवर्टाइजमेंट किया, सो दैट एडवर्टाइजमेंट इज अगेन पनिशेबल. पेनल्टी फॉर एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट, फाइन ऑफ 500 रुपीज ऑन फर्स्ट कन्विक्शन एंड अपॉन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years, 10 साल तक सजा हो सकती है, और फाइन और बोथ. Now for penalty for contravention of provisions of the Act for manufacturing and distribution of cosmetics. तो ये कोई भी जो एक्ट के अंदर जो रूल है उसको अगर तोड़ दिया या फॉलो नहीं किया, तो पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट फॉर manufacturing and distribution of cosmetic, so imprisonment up to 3 years, imprisonment up to 3 years for manufacturer and imprisonment up to 1 year for the distributor. मतलब उसके लिए भी सजा है, मैन्युफैक्चरर के लिए 3 साल की जेल है और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके लिए 1 साल की जेल है. तो penalty for contraventions of any provisions of the act related to manufacturing of drug and cosmetic. मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्मेटिक के भी, मतलब कॉस्मेटिक भी ड्रग के अंदर ही आता है, मतलब डीएनसी एक्ट के अंदर आता है. तो any contraventions of the provisions related to manufacturing and distribution of cosmetics is again liable for punishment of up to 3 years for manufacturer and imprisonment of 1 year to the distributor. Now again, penalty for the penalty related to manufacturing of sale of Ayurvedic, Siddha and Unani. So penalty for contraventions of the provisions of the act for related to manufacturing of Ayurvedic, Siddha, Unani under this chapter. So any contravention of section 33 EEC, मतलब इसमें आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग सेल के रिलेटेड प्रोविजंस है. सो imprisonment of 1 year and fine not less than 2,000. Imprisonment of
1 year and fine not less than 2000. Any contravention of the section 33 EEA, again imprisonment of 3 years and fine of 5000. Imprisonment of 3 years and fine of 5000. Now penalties related to narcotic and psychotropic drugs, NDPS, Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act 1985. सो NDPS, आपने एक मूवी देखा होगा, आई डोंट नो, एक फोर्स नाम का एक मूवी है, जॉन अब्राहम उसमें लीड एक्टर, उसमें ना जेनेलिया एज अ लीड एक्ट्रेस है. So that is a movie based upon the NDPS Act, Narcotic Drug and Psychotropic Act 1985. तो ऑफेंस क्या है, गुनाह क्या है, कौन सा गुनाह है इसमें? तो ऑफेंस एंड पेनल्टी, ऑफेंस एंड पेनल्टी, देयर आर मेजर 2 ऑफेंसेस एंड पेनल्टी. ओके, पहला ऑफेंस देखो, अगर आपने ये गुनाह किया, कौन सा गुनाह किया, ये यहाँ पे जो दिया है वो, any contraventions of the act related to poppy straw, opium poppy or opium or prepared opium or coca plant and use, manufacture drug, preparation, substance, cannabis and ganja. So any contraventions of the NDPS Act related to opium poppy, poppy straw or prepared opium or coca plant or leaves or manufactured drug or preparation, substances, cannabis and ganja. So any contraventions related to the import, export, transshipment, and import, export, transshipment or external dealing of drugs and or allowing your premises for commencing these offenses. मतलब अगर कौन सा भी प्रोविजंस के विपरीत जाके आपने कोई गुनाह किया इसके रिगार्डिंग, ओपियम पॉपी के बारे में, मतलब आपने ओपियम पॉपी उगा दिया आपके खेत में, वो गवर्नमेंट आपको आएगी, अरेस्ट करेगी, लेके जाएगी, है ना. या फिर आपने क्या किया कि कोका प्लांट लगाया, गवर्नमेंट आके लेके जाएगी. आपने क्या किया, गांजा उगाया आपके घर के खेत में, लेके जाएगी. ठीक है. तो एनी कॉन्ट्रावेंशंस रिलेटेड टू poppy straw, opium poppy, prepared opium, coca leaves, है ना, cannabis, prepared substances और manufactured drug, इनके definitions दिए हैं under the narcotic and psychotropic drug. Provisions related to import, export, transshipment or external dealing of drugs or allowing your premises to commence the offense. मतलब है ना, आपके यहाँ पे आपने 2 मंजिला घर बना लिया, 2 मंजिला घर बना लिया, ऊपर आप रह रहे हो, नीचे आपने रेंट पे दे दिया, रेंट पे आ गए 2-4 छपरी बच्चे रहने के लिए, आपको क्या मालूम वो क्या करते. अगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अगर गांजा का डीलिंग करना चालू किया आपके घर से और आपके घर पे छापा आ गया, तो आपको भी पनिशमेंट है. आप कितना भी चिल्लाओ, सर मुझे क्या मालूम उन्होंने क्या किया, मतलब क्या है कि अलाउिंग your premises for commencing of your offense. तो गुनहगार तो है वही, उन्होंने गुनाह किया है, लेकिन आपके घर में हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है आपने आपका घर गुनाह करने के लिए दिया है. So what is the penalty for that? Contraventions in relation to poppy straw, opium poppy or opium, prepared opium, coca plant leaves, manufactured drugs and preparation substances, cannabis and ganja, related to import, export, transshipment or external dealing of drugs or allowing your premises to commence the offense. क्या है पेनल्टी? इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी 2-4 बार आ चुके. सो पेनल्टी इज नथिंग बट द रिगरस इम्प्रिजमेंट. कौन सा इम्प्रिजमेंट? रिगरस इम्प्रिजनमेंट. आप बोलेंगे सर ये रिगरस इम्प्रिजमेंट क्या होता है ना, आप बोलते हो ना सर, है ना, आप बोलते हो कोर्ट में देखा होगा, इसको कड़ी सी कड़ी सजा दे दीजिए जज साहब, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए इसको जज साहब. कड़ी सी कड़ी सजा क्या होती है? रिगरस इम्प्रिजनमेंट.
rigorous imprisonment up to 10 to 20 years and fine of 1 to 2 lakh on a first conviction. अगर पहली बार आपने गुनाह किया है, ऊपर वाला गुनाह अगर आपने पहली बार किया है तो आपको कड़ी से कड़ी सजा 10 या 20 साल की लग सकती है या उसके बीच में भी लग सकती है। एंड फाइन देना पड़ेगा आपको 1 to 2 lakhs अगर पहली बार किया है तो। अगर सुधरे नहीं हो आप, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हो, ऑन अ सब्सिक्वेंट कन्विक्शन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 15 to 30 years, डबल करो उसको, एंड फाइन ऑफ 1.5 to 3 lakhs। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार आ चुका है, जीपैट में भी आ चुका है ना। देखो सेकंड पेनल्टी क्या है, सेकंड ऑफेंस क्या है, दूसरा गुनाह क्या है। ए पर्सन हु कॉन्ट्रावेंसेस द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इन रिस्पेक्ट टू गांजा और गांजा फॉर कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस प्लांट, है ना। एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेंसेस द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इन रिस्पेक्ट टू गांजा और कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस प्लांट, जिसने अगर कोई भी, है ना, प्रोविजंस है, प्रोविजंस रिलेटेड टू गांजा एंड कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस प्लांट, कैनबिस प्लांट का कल्टीवेशन या फिर गांजा का कल्टीवेशन या फिर उसका सेल, उसके रिलेटेड जो प्रोविजंस है, उसके रिलेटेड जो नियम है, एनी कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इन रिस्पेक्ट टू गांजा और कैनबिस, that is again liable for punishment. And what is the penalty? देखो पहला ऑफेंस तो हो गया अपना, दूसरा ऑफेंस, a person who is contravening or contraventions the provisions of the act in respect to ganja or cultivation of cannabis plant, so rigorous imprisonment up to 5 years। क्या है, rigorous imprisonment up to 5 years, fine of 1.5 lakh, rigorous imprisonment of 5 years and fine of 15,000 on first conviction, on subsequent conviction imprisonment of 3 years and fine of 1 lakh। पहली बार गलती किया है 5 साल की सजा हो सकती है, फाइन लग सकता है 15,000। दूसरी बार गलती किया तो सजा हो सकती है 3 साल की, फाइन लग सकता है 1 लाख का। थर्ड ऑफेंस देखो, इलीगल कंजम्पशन पोजीशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, है ना। जैसे अपना ये क्या, आर्यन खान, शाहरुख खान का बच्चा आर्यन खान, इसमें पकड़ा गया था। इलीगल कंजम्पशन और पोजेशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन और बोथ, तो 1 साल की सज़ा हो सकती है। लेकिन शाहरुख खान का बच्चा है तो सज़ा कैसे होने देगा, बाप थोड़ी सज़ा होने देगा उसको। तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, फाइन और बोथ, ठीक है। अब ठीक है, याद रखना है आपको, इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट इज अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1971। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, टू टर्मिनेट द मेडिकल प्रेगनेंसीज। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑफेंस, एनी पर्सन, ऑफेंस मतलब गुनाह, एनी पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर and engaged in the termination of pregnancy should be punished with the imprisonment or fine or both। मतलब क्या है कि अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ओनली रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैज अ राइट टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, है ना। मतलब प्रेगनेंसी अबॉर्शन करने के लिए, है ना, किसको अपॉइंट किया है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को, है ना। अगर वो छोड़ के, मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, दूसरा ही कुछ है, दूसरा ही कोई बंदा है, उसका ना डिग्री है, ना डॉक्टर है, ना उसका आर्या रिकग्निशन है, वो कर रहा है, तो दैट इज लायबल फॉर पनिशमेंट एंड दैट इज लायबल फॉर इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोथ। इतना क्या है वो नहीं दिए। एनी पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड एंगेज्ड इन द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी should be punishable with the imprisonment or fine or both। Second, any contravention
any contraventions of the provisions will be punishable with the imprisonment or fine of 10,000 sorry or fine of 1,000 or both. तो है ना, यहाँ पे ज़्यादा कुछ स्पेसिफाई नहीं है क्या है इसमें, है ना, इसमें एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, इसमें एक दो क्वेश्चन आते हैं. नाउ नेक्स्ट, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट. मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, रूल्स 1956. उसके अंदर क्या पेनल्टीज है ना. मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, रूल्स 1956. Any contraventions of the provisions, like for example failure to pay excise duty or failure to pay excise duty or failure to supply information or attempt to commit any one of the above offense is punishable with the imprisonment of 6 months and a fine up to 2,000 or both. तो इसके अंदर जो प्रोविजंस है, नियम है, उसका अगर उल्लंघन किया है ना, any contraventions of the provisions of medical and toilet preparation act 1955, like a failure to pay excise duty, failure to supply information, attempt to commit any one of the above offenses shall be punishable with the imprisonment of 6 months, fine of 2,000 or both. Second, offense related to warehouse. यहाँ पे अगर warehouse के related provisions ये किए तो, if you are contravening the provisions related to medical and toilet preparation act 1955 related to provisions related to warehouse, तो fine up to 2,000. मेंटेनिंग द फॉल्स रिकॉर्ड इन अकाउंट, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको अल्कोहल दे दिया और वो उसका आपने रिकॉर्ड ही नहीं रखा प्रॉपरली या फिर जानबूझ के गलत रिकॉर्ड रखा, तो मेंटेनिंग द फॉल्स रिकॉर्ड अकाउंट इन अ वेयर हाउस, सो अगेन फाइन ऑफ 2,000 रुपीज. ये पुराना है, अभी रिवाइज हो चुका है, ज़्यादा लेते है ना. सेल ऑफ ड्यूटीएबल गुड एक्सेप्ट इन अ प्रेस्क्राइब्ड कंटेनर, है ना. सेल ऑफ ड्यूटीएबल गुड मतलब क्या, एनी गुड हैविंग अल्कोहल और एनी narcotic substance that is a dutiable good. So sale of dutiable good except in a prescribed container, keeping the stock of dutiable good in a disorderly manner, fine of 1,000 rupees. And obstruction of any officer under the act for carrying out their duties, फाइन अप टू 600 रुपीज. ये गए मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट के अंदर पेनल्टीज. नाउ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954. तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट और ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट. Any person who contravenes any provisions of the act is liable for punishment on a first conviction 6 month imprisonment. पहली बार 6 month imprisonment or fine or both. On second conviction, imprisonment will be 1 year or fine or both. Drug price control order, DPCO, drug price control order. DPCO Act was published in 1995. ना ईयर ऑफ पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं. ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, एनी कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट इज लायबल फॉर पनिशमेंट अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1995. तो जो DPCO एक्ट होता है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995, तो इसके अंडर एनी कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ द एक्ट again liable for punishment according to the provisions of Essential Commodity Act 1955. इसी के ऊपर भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है. और एक बार बोलता हूँ, under the DPCO Act any contraventions of the provisions of the DPCO 1995 Act is liable for punishment according to the
प्रोविजंस ऑफ इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। तो डीपीसीओ एक्ट किसके अंडर होता है? अंडर द इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। नो, प्रोविजंस ऑफ द फूड है ना, सॉरी, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। All offenses will be punishable with the imprisonment of 6 months, which may extend up to the 3 years, and fine up to 1000। फूड अडल्ट्रेशन एक्ट जो है उसके अंदर जितने भी ऑफेंसेस है वो उसका सजा एक ही है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने की जेल, विच में एक्सटेंड अप टू 3 years, 3 साल तक बढ़ा सकते हैं, फाइन ऑफ 1000। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 ये ऑलरेडी आपको हो चुका होगा कॉलेज में, इसका जस्ट रिवीजन ले रहा हूँ। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, जस्ट मिनट, उसका इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, एनी कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ द सीक्रेसी ऑफ इन्वेंशन। आपने जो इन्वेंशन किया है वो आप ही को उसका क्रेडिट जाना चाहिए, उसका फायदा आपको होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ द सीक्रेसी ऑफ इन्वेंशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ एंट्रीज इन द रजिस्टर, गलत एंट्री कर दिया तो दैट इज इम्प्रिजमेंट ऑफ, है ना, दैट इज लायबल फॉर इम्प्रिजमेंट अप टू 2 years और फाइन और बोथ। तो पेटेंट एक्ट के अंदर कॉन्ट्रावेंशन किया, आपने एक्ट का उल्लंघन किया, you have disclosed the secrecy of invention or falsification of entries in the register, liable for punishment, that is imprisonment of 2 years or fine or both। unauthorized claim of patent, है ना, मतलब मैंने कुछ इन्वेंट किया और मैंने पेटेंट ले लिया, मैंने पेटेंट ले लिया 20 साल के लिए, इंडिया में 20 साल के लिए पेटेंट मिलता है, और आपने क्या किया बाद में उसके ऊपर क्लेम किया, अनऑथराइज्ड क्लेम ऑफ पेटेंट दैट इज लायबल फॉर फाइन अप टू 1 lakh, रॉन्गफुल यूज ऑफ वर्ड लाइक पेटेंट ऑफिस। आपका और पेटेंट का कोई संबंध ही नहीं है, आपने घर के बाहर बोर्ड लगा के रखा है या पेटेंट ऑफिस, रॉन्गफुल यूज ऑफ वर्ड पेटेंट ऑफिस, इम्प्रिजनमेंट, लायबल फॉर पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months और फाइन और बोथ, है ना। आपने अगर लगा के रखा यहाँ पे मैं पेटेंट ऑफिस है, कहीं का पेटेंट ऑफिस, वो आपका पेटेंट ऑफिस नहीं है, वो नहीं, तो वहाँ पे आपको 6 महीने की सज़ा हो सकती है और या फिर फाइन भी लग सकता है ना। प्रैक्टिस बाय अनरजिस्टर्ड एजेंट, है ना, प्रैक्टिस बाय अनरजिस्टर्ड एजेंट मतलब कोई भी आयरा गहरा नत्थु खैरा, कोई भी आयरा गहरा नत्थु खैरा आपको बोल दे चल मैं तेरा पेटेंट करवा के देता हूँ, मैं पेटेंटिंग एजेंट हूँ। कोई भी आयरा गहरा नत्थु खैरा पेटेंट रजिस्टर्ड एजेंट होता है, रजिस्टर्ड पेटेंटिंग एजेंट होता है। तो ये प्रैक्टिस ऑफ, है ना, प्रैक्टिस ऑफ पेटेंट फाइलिंग बाय unregistered agent, so that is liable for punishment again, fine of 1 lakh on first conviction and fine of 5 lakh upon second conviction। तो कोई भी आयरा गहरा ना तो कह रहा ये बोल नहीं सकता कि मैं पेटेंटिंग एजेंट हूँ या फिर मैं, है ना, लाइक दैट। पॉइजन एक्ट 1990, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। पॉइजन एक्ट was enacted in, so Poison Act was enacted in 1919। Illegal possession or sale or import of poison, illegal possession or sale or import of poison। अगर आपने पॉइजन आपके साथ रखा या फिर सेल किया या फिर इंपोर्ट किया, वो क्या है, गुनाह है, दैट इज पनिशेबल विद द imprisonment of 3 months और फाइन ऑफ 500
ऑन अ फर्स्ट कन्विक्शन, है ना। इलीगल पोजीशन मतलब आपके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है टू स्टॉक, टू सेल, टू import the poison is a punishable. And what is the punishment? So imprisonment of 3 months or fine or both. 3 महीने की जेल हो सकती है, 500 रुपये फाइन लग सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। ऑन सेकंड कन्विक्शन डबल द इम्प्रिजमेंट, डबल द फाइन, है ना। तो अपॉन सब्सिक्वेंट इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months, फाइन ऑफ 1000 और बोथ, है ना। नो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू द एनिमल एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू द एनिमल एक्ट। तो यहाँ पे आदमी का मर्डर कर देते, आदमी का बर्बाद कर देते, आदमी का मर्डर कर देते, लेकिन यहाँ पे इंडिया में एनिमल्स को भी सिक्योरिटी है। तो दैट इज अ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू द एनिमल्स। आप एनिमल्स के साथ में दरिंदगी नहीं कर सकते, एनिमल के साथ में आप बर्बरता नहीं कर सकते। अगर कोई कुत्ता है उसका पैर पकड़ के घुमा दिया और फेंक दिया, फाइन लग जाएगा। कोई बिल्ली है उसको मार रहे आप, किसी ने वीडियो बना लिया सोशल मीडिया पे डाल दिया, आपको फाइन लग जाएगा, आपको सजा हो सकती है। तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू द एनिमल एक्ट, ट्रीटिंग द एनिमल क्रुएली, मतलब अगर आपका कुत्ता है 4 दिन से आप उसको बांध के रखा है और मार रहे हो, है ना, सनकी जैसे बिहेव कर रहे हो। ट्रीटिंग द एनिमल्स क्रुएली ऑन अ फर्स्ट कन्विक्शन, फाइन नॉट लेस देन 10 रुपीज। अब ये 10 रुपीज नहीं है, बहुत ज़्यादा होता है। मे एक्सटेंड अप टू द 50 रुपीज एंड अपॉन नेक्स्ट कन्विक्शन 25 to 100 रुपीज फाइन लग सकता है, ज़्यादा होता है एक्चुअली। बट परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस लाइक फुका और अदर, है ना। हमारे पास 10 गैया है और सभी गैया अच्छे दूध देती है, लेकिन क्या है कि हमारा पड़ोसी जो है ना वो हमसे जलता है, और हमारा पड़ोसी जो हमसे जलता है उससे देखा नहीं जाता कि हमारी गैया दूध देती है ना। तो फिर उसने क्या किया, हमारे गाय के ऊपर तंत्र या मंत्र का प्रयोग कर दिया, है ना, और हमारे गाय का दूध हो गया बंद। और उसके लिए मैं अभी बाबा के पास गया और बाबा को बोला, है ना, बाबा काल भैरव के भक्त हैं बाबा, बाबा ने बोल दिया है कि इसके ऊपर एक पूजा करना पड़ेगा, इसके ऊपर मैं तंत्र करूँगा, तंत्र का प्रयोग करूँगा, तब आपकी गैया दूध देने लगेगी। परफॉर्मिंग ए operations like fuka or any other operations to increase the milk of your cow, so that is also punishment, so liable for punishment of, है ना, fine of 1000 rupees or imprisonment of 2 years। मतलब जानवरों को भी यहाँ पे प्रोटेक्शन है, ठीक है। these are the different acts and their penalties under every act, different act and penalties under every act। now we'll see the objectives of different acts, है ना, एकदम शॉर्ट में important part only। देखो, different acts and their year of passing along with the objective and important definition under the act, है ना। तो एकदम शॉर्ट में jurisprudence कर लेंगे अपन। तो पहला है देखो फार्मेसी एक्ट 1948, Pharmacy Act 1948। So Pharmacy Act 1948 was passed with the objective to regulate the pharmacy profession in India। This act is applicable for everywhere except Jammu and Kashmir। जम्मू एंड कश्मीर में ये एक्ट लागू नहीं होता है। Pharmacy Act 1948 was passed with the broad objective to regulate the pharmacy profession in India। It is enacted everywhere in India except J&K। इसमें क्या है कि अंडर द एक्ट देयर आर डिफरेंट चैप्टर्स अंडर द एक्ट। चैप्टर 1 इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, चैप्टर 2 इज नथिंग बट द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, चैप्टर 3 में क्या है, स्टेट काउंसिल है, चैप्टर 4 में क्या है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट,
रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, चैप्टर 5 में आता है मिसलेनियस। कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया किस चैप्टर के अंडर है, चैप्टर 2। Likewise. Now next is the Drug and Magic Remedies Act or Objectionable Advertisement Act 1954. Rules 1955. So Drug and Magic Remedies Act was passed on a 30th April 1954 with the objective of controlling and prohibiting the advertisement. Drug and Magic Remedies Act was enacted with the broad objective of controlling and prohibiting the advertisement of magic remedies which alleged or illegally possesses the power of the magic qualities. मैजिक रेमेडीज मतलब क्या कि कोई भी आके बोलता है आपको नहीं मेरे पास ये नुस्खा है, मेरे पास जो नुस्खा है वो कैंसर क्लियर कर देगा, है ना। कोई भी आके बोलता है मेरे पास ये नुस्खा है जो आपका, है ना, आपको जो बेटा नहीं हो रहा है वो बेटा करेगा आपको, मतलब कैसे, आई डोंट नो। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट was enacted on 30th April 1954, passed with the objective to control and prohibit the advertisement of magic remedies which is claimed to possess a miraculous magic qualities. What do you mean by magic remedies? Magic remedies like जैसे होता है ना तलिस्मान, ताइथ, सैक्रेड थ्रेड्स, कवचा, ना। तो जैसे एक बच्चा होता है अगर दूर पढ़ने ले जा रहा है तो उसकी माताजी क्या करती है, उसके गले में एक धागा बांध देती है, वाहे गुरु तेरा रक्षा करेगा, या फिर सीढ़ी वाले बाबा तेरे साथ रहेंगे। वो बाबा का ही पता नहीं तो तुम्हारा क्या होगा ना। मैंने मेरा बच्चा जा रहा है कश्मीर में पढ़ने के लिए, उसका एक ताइद दे दिया, पेटी बांध के दे दिया गले में, पता है ना। Magic remedies like talisman, tithe, sacred threads, couches, or any other charm which possess a miraculous power to cure the disease. इसमें वैसा होता नहीं है, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि इसमें ये जो यंत्र दिया है मैं, है ना, बाबा जी बोलते हैं, बाबा जी उसी का पैसा लेते हैं, है ना। बाबा जी बोलते हैं मैंने ये यंत्र दिया है, बच्चा जा सब कुछ भला होगा, बच्चा तेरा शादी नहीं हो रही ना तो ये ले, क्या ताइद ले, इसको 2 बार प्रदर्शना कर ले और शादी हो जाएगा बच्चा, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता। ऑल दीज आर नोन एज अ मैजिक रेमेडीज, ऑल दीज आर नोन एज अ मैजिक रेमेडीज, है ना। वैसा अगर होता तो मैं बाबा को बोलता, बाबा एक काम करो, जितना चाहिए उतना पैसा ले लो, पाकिस्तान को मिटा दो 10-15 मिनट में। कुछ ना कर रहे, कुछ ना करते, है ना। Magic remedies: talisman, tithe, sacred threads, couches, or any other charm which possesses a miraculous power to cure the disease. Advertisement means क्या? Advertise means any notice or any circular or label or wrapper or any other document or any announcement made by orally or by means of producing और ट्रांसमिटिंग साउंड, लाइट और स्मोक। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आप क्या करते हो, कुछ नोटिस लगा देते हो बोर्ड के ऊपर, है ना। जैसे रास्ते पे जा रहे एलईडी बोर्ड है, वहाँ पे एक ऐड चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट। कोई सर्कुलर, मतलब सर्कुलर पास किया है सबको, या फिर कोई रैपर है, रैपर के ऊपर भी आपका एडवर्टाइजमेंट होता है। कोई डॉक्यूमेंट है या फिर इन्हीं अनाउंसमेंट करते हो, जैसे नहीं का दिहाड़ी रेडियो वाले आते हैं दिन में ना, बाहर सब्जी ले लो, है ना। अनाउंसमेंट मेड ओरली और बाय मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग और ट्रांसमिटिंग द लाइट और साउंड, है ना, को एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं अंडर द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट।
ठीक है. Drug and Cosmetic Act was passed in 1940. Rules under 1945. Objective क्या था? Objective of DNC Act. DNC Act was passed with the objective to control the import, manufacturing, sale of drug and cosmetic. Drug and Cosmetic Act was passed in 1940 with the objective to control import, manufacturing, sale, distribution of drug and cosmetics. Now, Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act 1985. NDPS Act 1985. The objective passed with the objective to control the operations related to narcotic and psychotropic substances. Now this act is divided into 6 chapters and 83 sections. Medical Toilet Preparation और Excise Duties Act इसको बोलते हैं Excise Duty Act 1955 और Medical and Toilet Preparation Act 1955 passed with the objective of provisions for the levy and collection of excise duty on a medical and toilet preparation, to collect the excise duty on medical and toilet preparation containing alcohol, opium, Indian hemp or any other narcotic substance. So it was passed on 1st of April 1947. It has 11 chapters and 21 sections. Then Industrial Development and Regulation Act 1952 passed with the objective of monitoring and building and developing the industries in India, in the country, industrial activities in the country. The Industrial Development Act was passed with the objective of monitoring, building, यहाँ पे बुलेट नहीं होगा लेकिन building and developing the industries and industrial activities in the country. I hope you are getting. Then Drug Price Control Order 1995. DPCO Act. DPCO Act was passed with the objective to control the prices of drug. Drug is categorized as an essential commodity under the Section 3 of Essential Commodity Act 1951. So drug is also considered as an essential commodity under the Section 3 of Essential Commodity Act 1951. Prevention of Food Adulteration Act 1954 passed with the objective of preventing the import, manufacturing, sale or distribution of adulterated, misbranded food and prevent all type of food adulteration. To prevent the all type of food adulteration. Is a Medical Termination of Pregnancy Act 1971. So this Medical Termination of Pregnancy Act 1971 was passed with the objective to provide a termination of pregnancy by a registered medical practitioner for a bona fide reason, for a valid reason. तो कोई भी जाके प्रेगनेंसी अबॉर्ट नहीं कर सकता, उसके लिए वैलिड रीजन होना चाहिए. वही रीजंस दे आर गिवन इन द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971. जैसे प्रेगनेंसी less than 12 weeks होना चाहिए, and if physicians in an opinion that the pregnancy may harm the mental or physical health of a mother or a child to be born with the abnormality like that. Now, the Patent Act 1970 that was came in a force with the Patent Act 1970 came in force in 1972.
with the objective as to make India trade related intellectual property right. India trade related intellectual property right. First, with the objective as to make India trade related intellectual property rights compliant by providing the exclusive marketing rights till the product patent are brought. Poison Act 1990 was to regulate the import, possession, sale of the poison. हमने ये देखा है इसका penalties. Prevention of Cruelty to the Animal Act 1960 to prevent the inflictions of unnecessary pain and suffering on an animal, to prevent the cruelty to the animal. That is objective. Objective of AICT Act 1987. Yeah. So AICT Act was enacted on 15th December 1987. AICT is a corporate body. Head office of council is at Delhi. Total members are 51 members. 3 members are AICT official. 15 are ex officio. 31 are nominated. Members of AICT कितने होते हैं? 51 members. उसमें से 3 क्या होते हैं? AICT officials. 15 are ex officio. 31 are nominated members. And 2 are the member of parliament. Yeah, okay. उसमें chairman, vice chairman, member, secretary, they are appointed by central government. Chairman of AICT, vice chairman, member, secretary, they are appointed by central government. Okay. Now remaining part we'll see tomorrow. Tomorrow we'll see the different schedules, forms, and all that. Okay. This was only part 1, so tomorrow we'll see part 2.